शुभुजी मो कथा तो आज्ञा सर। so box layout extends from the frame class एठी मु बटन जो क्लास अछि तार ऑब्जेक्ट बनेली इन द फॉर्म ऑफ ए array ये बटन ना साइज हला मु एठी पांचटा एलिमेंट एठी ऐड करिवि बटन में जरा मु पांचटा एलिमेंट ऐड करिवि तापर से बटन गुडा को शो करिया पई बटन 0 न्यू बटन बटन 1 पोजीशन ने गोटे बटन देखेला देन 2 पोजीशन ने गोटे बटन देखेबो 3 पोजीशन ने गोटे बटन देखेबो एमती कौन करिवो ना आस्ते आस्ते पांचटा बटन मते शो करिवो देन सेट लेआउट न्यू बॉक्स लेआउट तो मटे गोटे बॉक्स लेआउट देखेबी तो न्यू बॉक्स लेआउट एटा दियाला y एक्सिस तो 0 रु 5 माने 0 रु 5टा बटन एठी शो करिवो से बटन गुडा को सब ऐड हबो by using add method where adding the button to the frame रे हमें ऐड कले तापरे आर लेआउट हमें पास कले y एक्सिस रे देखियो एटा हला हमर y एक्सिस थ्रू रे देखेला एबे जदि हमें एठी चेंज कर दउ एटा x एक्सिस रे पास करू बुझला दिरा डिफरेंस एटा आज्ञा लाइक सर। बॉक्स लेआउट now we move to the event handling
Okay, now defining event and event handling. Event is an object that describe what happened. Okay, माने event handling होची that is a object, it describe what happened. माने जेतेबेले हमें horn को press करूचे, so that means we are performing some action on the horn in a vehicle. तो सेटा गोटे साउंड आछी, तो तार रिएक्शन टा कोन आछी, हम गोटे साउंड दउची. तो सेमती हमें जेतेबेले just 1 minute. ओके सेमती आम जो कौन सी एक्शन परफॉर्म करवा एनी कंट्रोल जो जीओआई एप्लिकेशन आम बटन कंट्रोल ऐड करुचे टेक्स्ट बॉक्स कंपोनेंट ऐड करुचे तो एनी कंपोनेंट जदि आम ऐड करवा देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट यू कैन से इट इज ए वन इवेंट इज हैपेन माने आम बटन को जो लॉगिन करवा आम आईडी पासवर्ड देले लॉगिन बटन ऊपर क्लिक कले मीन्स वी आर परफॉर्मिंग सम एक्शन दैट वी गो फॉर ए लॉगिन. ओके जदि आमर इनफॉरमेशन वैलिडेट होची से हमको नेक्स्ट पेज को नौची. इवेंट मीन्स एनी एक्शन दैट परफॉर्म ऑन द कंपोनेंट इज कॉल्ड द इवेंट. आमे कहि परिबा जेमति कि गोटे मशा जदि हमको कामुडुची so that is also a event. जेतले मशा कामुडुची हमर नर्व जाय के हमर ब्रेन को ऑर्डर दउची that something happen in my body, then you have to take a action. So it is taking the action and we just beat the mosquitoes. So that is called as your what event handling, means your hand is doing the event handling operation. So event means object that describe what happened. Event sources is called as the generator of event, who is generating the event. Event handler is what na, it is a method that receive an event object. ये गोटे event object receive करिवा, dispatch it and process the user interaction. Okay, then user interaction को से process करिवा. Then I have to move the next operation. An event can be sent to the many event handler. तो ये मन रहला. Event means any action that you have to perform, that is called as the event. Okay, then event sources is called as the generator of event, who is generating the event. Okay, माने को जगह रे मोर इवेंट टा जनरेट हला मु जते बटन ऊपर क्लिक करूची मोर इवेंट सोर्सेस कोटे रहला बटन रहला तापर इवेंट हैंडलर गोटे रहला कोन ना मेथड माने मु जते बटन ऊपर क्लिक करबी नेक्स्ट एक्शन टा कोन हबो से मते गोटे मेसेज शो करिवो. सो दैट इज कॉल्ड द इवेंट हैंडलर मेथड. बुझिला? Okay. Yes, sir. An event can be sent to the many event handler. Suppose मते login करिवार अछि मु कोन करि परिबे ना either by clicking on the mouse रे मु क्लिक करी कि मु लॉगिन करि परिबे नले कीबोर्ड रो एंटर बटन प्रेस कले मु लॉगिन करि परिबे. सो दीटा वे रे मु लॉगिन करि परिबे. सो इवेंट कैन बी सेंड टू द मेनी इवेंट हैंडलर माने मते सेति पई दीटा जाक मेथड टा रजिस्टर करिया पड़िबो. माने माउस पई माउस रो मेथड डिफाइन करिया पड़िबो, कीबोर्ड पई कीबोर्ड रो मेथड मते डिफाइन करिया पड़िबो. दीटा मते मेथड डिफाइन करिया पड़िबो. तो जो भी मु एक्शन परफॉर्म करबी सेटा मते रेज करिवो. सो एन इवेंट कैन बी सेंड टू द मेनी इवेंट हैंडलर. Event handler register with component when they are interested in the event generated by the component. Okay, so like मु एठी गोटे one handler for the mouse, one handler for the keyboard. जदि मु कीबोर्ड रे किछि इवेंट परफॉर्म करछि बा कीबोर्ड रे किछि एक्शन परफॉर्म करछि कीबोर्ड पई जो मेथड टा मु डिफाइन कर देबी से मेथड टा एग्जीक्यूट होबो. जदि मु माउस पई किछि मेथड डिफाइन करिछि त माउस पई जो मेथड टा डिफाइन करथिबी से मेथड टा एग्जीक्यूट होबो. बुझियला? Again. Okay.
So client object register with a GUI component. आमे client object का कोई परिवार ना frame panel ता भीतर आमे सब GUI component को add करिया button add करी परिवा then we are adding what any other components मु button add करी परिवी combo works गुड़ा सब आमे previous class रे पढ़ते से सब attend add करी होगा तो GUI component only trigger the handler for the type of event occurs माने जहाँ पाई मु जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करीबी ओके सपोज मु गोटे बटन डिफाइन कली से बटन टा जते बडे एक्शन को वे एक्शन परफॉर्म करिवो फास्ट इज कीबोर्ड भी पाई करि परिवो माउस पाई भी करि परिवो तो जते बडे मु कोनोसी एक्शन परफॉर्म करूची क्लाइंट ऑब्जेक्ट ताको जज करिवो जे मु को सोर्स रो मु इवेंट टा जनरेट करूची से जो वर्क टा से कौन करिवो ना डिस्ट्रीब्यूशन करिवो का ऊपर वर्क टा डिस्ट्रीब्यूशन करिवो से वर्क टा डिस्ट्रीब्यूशन करिवा पई से यूज करिवो गोटे डेलीगेशन मॉडल तो डेलीगेशन मॉडल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंग द मल्टीपल क्लासेस माने गोटे बटन रे मु दुईटा पई मु मेथड बनेले गोटे कीबोर्ड पई बनेली गोटे माउस पई बनेली जेते बेले मु कीबोर्ड सहित काम करिवि कीबोर्ड रे किछ एक्शन परफॉर्म करूची ऑटोमेटिक कीबोर्ड अंडर रे जो मेथड अछि सेटा एग्जीक्यूट होबो जेते बेले मु माउस पई एग्जीक्यूट करिवि तो माउस रे जो मेथड ता डिफाइन करजे सेटा एग्जीक्यूट होबो so that is delegation model it is distribute the work among the multiple classes okay yes sir आज्ञा good evening sir good evening तो व्हेन जेमति कि हमको मशा कामुड़ले कौन हुए ना जो एक्शन टा परफॉर्म हुए से हम ब्रेन को जाए तो ब्रेन कौन करे ना ऑर्डर दबो कौन करबा को हबो तो सिमिलर वे हमर कौन हुए ना ब्रेन इज कॉल्ड द लिसनर ब्रेन इज लिसनिंग व्हाट इज हैपन विथ आवर बॉडी सिमिलर वे इफ यू वर्क विथ एनी काइंड ऑफ इवेंट माने हमें जो कंपोनेंट सब ऐड करूचे जीयूआई एप्लीकेशन रे जदि हमें किछि एक्शन परफॉर्म करूचे तार गोटे लिसनर थाए okay the screen is visible now रमेश स्क्रीन नहीं सर एबे तो आसनी ब्लैक है क्यों हां सर एबे आइला the user so there is a listener is present so when any action is performed जेमति हम देहरे किछि मशा फसा कामुले हमर कोन होछि ना ऑटोमेटिक हमर ब्रेन को से जिनसटा जाउछि ब्रेन टा ऑर्डर दउछि आ गोटे हाथ को जेंकी से मशा को मारिबा पई तो सिमिलर वे हमें एठी यूज करिवा कोन ना लिसनर यूज करूछे जते बेले हमें कोनोसी यूजर गोटे बटन ऊपर क्लिक करिवो बटन जोटा ऐड करथिबो ता ऊपर प्रेस करिवो एंड व्हाइल द यूजर इज टाइपिंग एनीथिंग इन a text box so at that timing the listener type is action listener so listener type ता होची action listener when user close a frame जतले यूजर ता फ्रेम को क्लोज करिवो listener type is window listener when user press a mouse button while cursor is over the component हमें एतबे माउस बटन टा को प्रेस करियो जेंति कि मु कर्सर टा गोटे जगह को आनले गोटे जगह जिनसे हाईलाइट होबो so that is called the what mouse listener when you move the mouse that is called the mouse motion listener component becomes visible component टा जेतबे visible होबो सेटा को जबो what component listener component get keyboard focus component टा जेतबे keyboard focus पाइबो सेतबे को आजिबो focus listener तो focus listener is used to get the keyboard focus बुझियला आज्ञा सर
action listener interface, it has only one method. Action listener interface भितर गोटे मेथड अच्छी कह action perform method माने आमे बटन ऊपर क्लिक कले से हमको कौन शो करिवो. So behind that some method is there present, so that method is called as the action perform method. So in action listener interface action perform method ta right there to detect the user click on screen button and does the keyboard equivalent, the action listener interface is present. So for adding the action listener, add action listener method is used. So add हमें action listener टा को automatic काम करी पाइबानी से हमें add method use करिवा. So add method is used for adding action listener method. बुझेला ने listener टा को add करने पे add use करिवा. और जदि हमें बटन ऊपर कौन सी क्लिक करूचे then से जो इवेंट हमारा जनरेट हवा that is called the action perform method. बुझेला आज्ञा. Similar way, in a mouse listener, to detect the mouse clicking, okay, so the program must have an object mouse listener interface. When the mouse upare mouse सहित किसी काम करिवा, mouse click, mouse exited, mouse entered, so that is called as the mouse listener interface. Mouse listener interface रे कौन रहिबो mouse enter माने मोर कर्सर टा देखो गोटे ब्लैक जो ब्लैंक स्क्रीन अछि मु इधर एप्लीकेशन भीतर को आनीबी से गोटे वे काम करिवो. माउस एग्जिटेड माउस ता जरा एप्लीकेशन बाहर को पळेबो सेटा गोटे आसीबो. माउस प्रेस जतरा माउस प्रेस करबी गोटे इवेंट जनरेट हबो. माउस रिलीज जतरा माउस क्लिक करके छाड़ीबी then that is another event. Okay, so these are the different events is happen by using of mouse listener interface. बुझेला आज्ञा सर. so you can implement multiple interface. हमें गोटे प्रोग्राम रे multiple interface जेमति कि माउस लिसनर इंटरफेस माउस मोशन लिसनर इंटरफेस गोटे प्रोग्राम रे multiple interface हमें ऐड करि परिबा. So listening to the multiple sources, multiple listener cause unrelated part of a program to react to the same event. Okay, so multiple listener cause only unrelated part of a program. The handler of all register listener are called when the event is occurs. Okay, the handler of the register listener are called when the event is occurs. जदि multiple interface हमें use करिबा जो event माने जो listener अंडर रे जो event थिबो से event ता हमर एठी काम करिवो. बुझियो छी जेमते कि माउस मोशन पाई माउस आज्ञा. मोशन अंडर रे जहा थिबो जो इवेंट गुडा थिबो से काम करिवो. माउस मोशन लिसनर जेतला हम यूज करिबा माउस लिसनर मोशन लिसनर अंडर रे जो इवेंट थिबो से गुडा काम करिवो तार से ऊपर परफॉर्म होबो. बुझियो छी आज्ञा. okay, now I go for one program.
तो ये प्रोग्राम टा रन करिया पे हमें दीटा मेथड यूज करिवा okay so for working with this program is generally helping you to go for the button handler okay so how to work with the button handler and आम बटन उपर क्लिक कले से गोटे एक्शन परफॉर्म करिवो एटी गोटे इवेंट हैंडलिंग पई मु दीटा पैकेज एटी इंपोर्ट कली गोटे डिजाइनिंग पई यूज कली इंपोर्ट java.awt.star that is one event that is one package another is for event handling work we're using import java.awt.event.star माने एटा दीटा इवेंट मोर जनरेट हला गोटे होची import java.awt.star आउटे import java.awt.event.star so it is a two method that we are using for event handling program then mo एटे गोटे फ्रेम डिजाइन कली प्राइवेट फ्रेम f आ गोटे बटन हला बटन b तो फ्रेम रो ना हला टेस्ट बटन ना ना हला प्रेस मी ना मो एटा देखै दउची अगर रन कर देला गोटे आईडिया आसी जीवो तापर तुम बुझी परियो प्रोग्राम टा नेट टा भारी प्रॉब्लम हो ଆଜ୍ଞା okay so java c test button.java then for execution mo use karibi screen is visible ନାଇଁ ସାର୍ ଆସିନି ବୋଧେ asini south re katibo ନା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ କନେକ୍ଟ ହେଇନି ବୋଧେ video connected ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ବି ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଡିଓ କନେକ୍ଟ ହେଇନି ବୋଲି ଦେଖଉଛି ସେଇ ନେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏବେ ଆସୁଛି ନା ନା ଏବେ ସାର୍ ଯାଏ ଆସୁନି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟା ଏବେ ଆଇଲା ଯେ ଭିଡିଓଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଇଏରେ ଆଉ ଥରେ କଟିବ এই କନେକ୍ସନ ଟା ପୁରା ନୂଆ ମାନେ ଏବେ ଆସିଲା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଆଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁନି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ନା ସାର୍ ଦେଖିଲା ଆସିଲା ଏବେ ଏବେ ଆଇଲା ହଁ okay so first I compile the application java c test.button then
ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଆସିଲା ଦେଖ ବଟନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଦେଖିବ action occurred button command is button pressed action occurred button command is button pressed ଯେତେ ଥର ମୁଁ ବଟନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବି ସେ ଦେଖିବ action occurred button command is button pressed ओके ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तो यही प्रोग्राम पे ମୁଁ ଗୋଟେ फ्रेम बनेली प्राइवेट फ्रेम एफ जो एई जो बटनटा आसुची जो उतरे एटा ଗୋଟେ फ्रेम आसिला फ्रेम रे ମୁଁ ଗୋଟେ बटन ऐड कली प्राइवेट बटन बी सुबुनी किछि कोन कहउछ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହଉନି वॉइस क्लियर होनी टोटली ଏବେ ଟିକେ ଶୁଭିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଗୁଡା କିଛି ଶୁଭିଲାନି ଠିକ ସେ ଛାଡି ଛାଡି एठी ଗୋଟେ ମୁଁ फ्रेम डिफाइन कली प्राइवेट फ्रेम एफ ऑब्जेक्ट हैला बुझी होची ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तापर ଗୋଟେ बटन एठी डिफाइन होला प्राइवेट बटन बी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ बुझी होची तापरे एठी ଗୋଟେ कंस्ट्रक्टर रहला कंस्ट्रक्टर रे ମୁଁ कोन डिफाइन कली ना ओके रोमेश सुबुनी क्लियर हेलो ନା ସାର୍ ओके ଗୋଟେ କାମ କରିବା आई विल स्टॉप दिस सेशन टुडे ओके तो नेक्स्ट क्लास रे काली यूटू स्टार्ट करिवि ओके हेलो ସାର୍ ଶୁଭୁନି କିଛି हाँ मु एटी स्टॉप करूची आजी हला नेक्स्ट क्लास रे पुनी यूटू स्टार्ट करिवि ଆଜ୍ଞା एबे माने सुबुची तो क्लियर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ एबे ଆଜ୍ଞା क्लियर सुबुची की ଉଁ, ठीक अछि काली काली यूटू स्टार्ट करिवा ओके एंड कर देबो काली काली यूटू स्टार्ट करिवा